Okay, today we are having tutorial third. So now we'll start with question first. Here, a fair coin is tossed three times, and the random variable x is equal to the total number of heads. So I am tossing coin three times, and random variable x is the number of heads. So sketch fxx and fxx, CDF and PDF. So if I'm tossing coin three times, so the sample space it will be H H H H H T and H T H T H H, or it has T T T T T H or T H T or HTT. So total number of possible outcomes or sample points are 8 here. And random variable x you have considered it is number of heads. So the value of random variable it will be it may be 0 means in three there is no head, and three one times head, two times head, and in three all three times you are getting head. So the value of this random variable or getting head it may be 0, 1, 2, 3. Now the probability x is equal to 0. This means probability of not getting head. This means 0 is corresponds to T T T, and here total number of outcomes are 8, and only your favorable when there is no head. This is only 1. So the probability your favorable divided by total number of outcomes. So the probability of not getting head in ketosis it is 1 by 8, and the probability of getting head one time in ketosis. This means probability of getting one head. So here one head is in these three there is only one head. So probability of getting this or this or you can say the probability because they are mutually exclusive. This may be or this may be or this may be. So I can write it as plus probability THT plus probability HTT. So this is 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8. This means 3 by 8. So probability of getting one head in three tosses it is 3 by 8, and probability of getting two head in three tosses and two heads are these three possibilities. So 3 by 8, and probability of getting three heads only there is one possibility where I can get three heads. So 1 by 8. So I have the value of x and probability corresponding to this random variable. So I can sketch the CDF and PDF also. So if I consider here the PDF, this is 0, 1, 2, and 3. And value, if I write 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, 4 by 8. So at 0, x0 probability is 1 by 8. So when x is 0, there is one impulse probability at this point. And at 1, the probability is 3 by 8. At 1, it is 3 by 8. At 2, it is also 3 by 8. And it is 1 by 8. So you can say the probability of getting two heads in three tosses, it is 3 by 8. And probability of getting one head in three tosses is also 1 by 8. And probability of getting no head and all three head it is 1 by 8. So from here you can find out the probability of getting all these things. So you can see here your PDF
will show you all the information related to the probability. What is the probability of getting one head in three tosses? You can see here 3 by 8. And also I can sketch here the CDF. You know the CDF is the summation of the probability up to that particular value. So if I consider here 0, 1, 2, 3. So probability at x is equal to 0. If I consider divide this 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, 4 by 8, 5 by 8, 6 by 8, 7 by 8, and 1. So at 0, the probability is 1 by 8 at this point. And the summation in this probability will be at this point only discrete value you can have summation, because this is a discrete random variable. So up to this point, the probability will be this continuous on right, the CDF. And at 1, the probability, it is 3 by 8. So summation of the probability at 0, it is 1 by 8, and at 1, it is 3 by 8. So probability x less than equal to 1, or you can say fx1. This is fx x CDF. So CDF at x is equal to 1. It is 4 by 8. So you are having jump with this probability. The jump shows you the CDF, PDF I told you. And here the PDF is 3 by 8. So jump is 3 by 8. So you will get 4 by 8. This jump is 3 by 8. This jump is the PMF, PDF, PMF or PDF. So this is 4 by 8. And up to 2, it will be continuous. And at 2, it is added. And the probability is 3 by 8. So 4 by 8 plus 3 by 8, it is 7 by 8. And this is, you can say the probability at x less than equal to 0, or you can say fx2. So at x is equal to 2, probability is 7 by 8. So you will have 7 by 8. And up to 3, it will be 7 by 8. And at 1, at 3, it will be added 1 by 8. 7 by 8 plus 1 by 8, 1. So this jump is 3 by 8. It is 1 by 8. And this is 1 by 8. So this CDF curve will give information of this PDF also, and the about the probability, all these things. Just like if I want to find out the probability of getting 2 head in 3 tosses. So probability of getting 2 head in 3 tosses, it will be the jump at this point, 3 by 8. And you can see here, probability of getting 2 heads is 3 by 8. And probability of getting 3 heads in 3 tosses, this jump 1 by 8. And you can see here, probability of getting 3 heads, it is 1 by 8. So these jumps shows you the probability at these discrete value. But if I want to find out the sum of the probability at x is equal to 2, means the sum of the probability of getting 2 heads less than or equal to 2 heads. 2 means I can get 0 head, I can get 1 head, I can get 2 heads. So sum of the probability of getting 2 heads, or you can say probability x less than equal to 2. So less than equal to 2 heads, the sum of the probability, it will be this y-axis, on the y-axis. So you can have the probability sum up to x, 2x is equal to 2, or you can say less than or equal to 2 heads. So probability of getting less than or equal to 2 heads, it will be 7 by 8, or probability of getting 2 heads, it is 3 by 8. So all informations are in CDF. So this CDF and PDF are very important. So in communication, only CDF, PDF are given, and you have to fetch all the information related to this. So you should know how can you fetch this information. So up to this point, if you are having any problem, you can ask. Otherwise, I'm going to next question.
No, sir. Okay. So next question is, find the expected value or mean value or statistical average where x is the outcome when we roll a fair dice. So x is the outcome when I'm going to roll a fair dice. So x, it will be, if I'm rolling a dice, so it may be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. So any outcome can be there if I'm rolling a dice. So there may be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So now, you know, the expected value of random variable x, it is the summation of the all value of that random variable and weighted by that particular probability of that particular random variable. So here you have to find out this PDF also, PMF or PDF, you can say anything. So the probability 1 means probability of getting 1 in rolling a dice. So the total number of outcomes are 6 here. Total number of outcomes are 6, and your favorable is 1, so it is only one event here. So 1 by 6. Probability of getting two heads, 2 in dice experiment. So it is again 1 by 6. So all are equally likely. So x is equal to 3, 1 by 6. Probability x is equal to 4, 1 by 6. X is equal to 5, 1 by 6. X is equal to 6, 1 by 6. So now Ex, it will be xpx, and here x, if x is 1, px is 1 by 6. So 1 into 1 by 6 plus x is 2, 1 by 6, 3, 1 by 6, 4, 1 by 6, 5, 1 by 6, 6, 1 by 6. So you can have 7 by 2. So the average value is 7 by 2. So this means if you will do the same experiment very many times, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, then on average you will get 3 or 4, in between 3 and 4, 3, 4, 3, 4. On average, you will get this type of thing. Next question. Calculate the variance if x represent the outcome when a dice is rolled. So previous example, but here I have to consider the variance. You know what is variance from the definition, as I told you. The variance of random variable x is the mean square value minus whole square of the mean value. So first of all, you know this thing. This is 7 by 2 in previous example. So first of all, you have to consider this thing. What is this? And this is from the definition, summation x square px. So from the definition of the expected value or E operator, so E operator on any random variable, it will be the summation of that random variable and the probability of random variable x. So here you can find out this will be x square 1, 1 by 6 plus 2 square 4, 1 by 6 plus 3 square 9, 1 by 6 plus 4 square 16, 1 by 6, 25, 1 by 6, 36, 1 by 6. So you can have here 91 by 6. So from equation first, you can have variance of x. It will be 91 by 6 minus 7 by 2 whole square. So it will be 35 by 12. So this is the variance of this
you can say this type of experiment. And so up to this point, if you are having any problem, you can ask. वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? गुड क्वेश्चन. सो इफ I divide this around 2.91 something, so you can say 3. This means जो आपका मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू 3 और 4 के बीच में थी, 3.5. ओके, सो आपका ऑन एवरेज अगर वेरी मैनी टाइम्स सुबह से लेकर शाम तक डाइस रोल करते रहो, ऑन एवरेज 3 और 4 आएगा मैक्सिमम. ऑन एवरेज 3-4 आएगा. लेकिन वेरिएंस क्या होगा कि वेरिएंस इधर 3, दिस मीन्स 1, और इधर 3, 6. और ये एग्जैक्ट है भी आपका, यही तो है, 1 और 6 के बीच में ये आपको आना है. इसी के बीच में तो वेरी करेगी वैल्यू. वेरी मीन वैल्यू से कहाँ वेरी कर रही है? अब आप खुद सोचो, मीन वैल्यू 3.5 है और 3 के इधर, दिस मीन्स 1 या 2 और 5 या 6 इसके बीच में वेरी करेगी. और ऑन एवरेज आपकी वैल्यू 3.5 रहेगी. अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये करते रहते हैं, उसका एवरेज लें, वैल्यू का एवरेज अगर लेते हैं तो 3.5 होगा एवरेज. अगर आप सुबह शाम तक डाइस रोल करते हैं और नोट करते रहो क्या आया, अभी 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो ऐसे लगे रहो, एक पूरी फाइल भर दो और उसका एवरेज अगर कैलकुलेट करो. अगर आप 100 टाइम्स और 200 टाइम्स और 300 टाइम्स कर रहे हो और उसका एवरेज लो, तो ऑन एवरेज इट विल बी 3.5 और बिटवीन 3 और 4, मीन्स 3 और 4 के बीच में ये वैल्यू रहेगी. लेकिन अगर वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है. तो आपको पता है 1 से और 6 के बीच में ये वेरी हो रहा है, तो ये यही इंडिकेट कर रहा है आपको, ये दिख भी रहा होगा. मीन वैल्यू से वेरी हो रहा है, मीन वैल्यू से वेरी दोनों साइड में 3 यूनिट से वेरी हो रहा है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, so next question. A school class of 120 students are driven in 3 buses to a symphonic performance. There are 36 students in one bus. So if there is one bus A, there are 36 students, and in bus B there are 40, and in C there are 44 students. When the buses arrive, one of the 120 students are randomly chosen. Let X denote the number of students on the bus. X means random variable X is the number of students on the bus and randomly chosen student. So find expected value. So what will be the value of random variable here? Can you tell me, anyone? What will be the value of random variable? Random variable denotes the number of students on the bus. Yes. Can you tell me what will be the value of random variable? 120, sir. 120. Gori 26. Sharma? Gori Sharma? Yes. Yes, sir. Can you tell me the value of random variable? What is the range of random variable? So range Means what will be the value of random variable X here? If random variable X denotes the number of student on the bus of the randomly chosen student. अगर आप X की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो EX कैसे निकालेंगे? सर ये मतलब A का 36 है ना, तो 36 into 36 upon 120 plus 40 into no, 40. I'm not asking this kind of thing. I'm just asking what will be the value of random variable X. वो into divide पता नहीं कौन सा, कोई लंबा सा फॉर्मूला बता दिया आपने.
इसमें फॉर्मूला थोड़ा है, x is the number of students on the bus of the randomly chosen student. Siddhant Pandey. Yes, sir. Yeah, can you tell me? The total number of students 120. ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए ना, एक्स तो कहीं बीच में रेंज करे, कोई रेंज होगी ना उसकी। जैसे आप एक कॉइन टॉस करते हैं, 2 कॉइन टॉस करते हैं, या एक मानो एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स अगर नंबर ऑफ हेड्स है तो उसमें रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, मींस हेड है या नहीं है, 0 और 1, सिंपल सी बात है। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो रैंडम वेरिएबल आपके 2 तक जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स आप अगर कंसीडर कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, so number of head in 2 coins, it may be 0 or 1 or 2. So likewise here, what will be the value 1 of by 3, random? sir. Yeah, okay. Here x denote the number of students on the bus of the randomly chosen student. If I have selected one bus, so the random variable is 36, 40 and 44. These are the random variable. This is the value of random variable, 36, 40 and 44. दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ो, x denote the number of students, x denote the number of students, x denote the number of students on the bus, in this bus A or bus B or bus C of the randomly chosen student. So x denote the number of student on the bus. अगर इस लाइन को आप 4 बार माइंड में रिपीट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, 36, 40 and 44. So now the probability when x is 36, so आपको 120 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं रैंडमली, आपके पास 36 केवल चॉइस है, तो टोटल तो आप 120 करोगे, लेकिन 36 में तो आप केवल 36 ही कर सकते हो। Then probability, it is 40 by 120, 44, 44 by 120. So the expected value, it is 36, 36 by 120 plus 40, 40 by 120 plus 44, 44 by 120. So from here you can find out 40.2667. So this is the answer of this question. Now, next question. The probability that a regularly scheduled flight departs on time is 0.83. The probability that it arrives on time 0.82. So 83% chances है कि ये flight departs करेगी within time, और arrive भी होगी within time 82% chances है. The probability that it departs and arrive on time means both are simultaneously, means both are happen, departs on time and arrive on time. It is 78%. Find the probability that a plane arrive on time given that it departs on time, and B part departs on time given that it has arrived on time. So if I consider the part A,
the probability that a plane arrives on time given that it departs on time. So means the required probability is if PA, A is the event, it arrives on time. So arrives on time, you have to find the probability that it arrives on time, given that it departs on time. So from the base rule, you know this thing, PDA by PD. So all values are given 0.78 by 0.83. So 94%, if it arrive on, if I know it depart on time, it will arrive on time. 94% chances are there. अगर कहीं रास्ते में मौसम खराब नहीं है, कुछ फ्लाइट की डायरेक्शन या कुछ ये चीजें नहीं है, तो 94% चांस है. नेक्स्ट पार्ट बी. सर पी क्या कहते हैं डिपार्ट ऑन टाइम और अराइव ऑन टाइम 0.78 है, और ए में दोनों में फर्क क्या है कुछ कहने में? क्या बोले? जो 0.78 हमको दिया हुआ है और हाँ. ए जो हमें क्वेश्चन दिया है, दोनों में हाँ. फर्क क्या है? फर्क इन द सेंस, मतलब आप इसको और इसमें फर्क पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे. पीडी हाँ. 0.78 और पहले ए जो क्वेश्चन दिया अराइव्स ऑन टाइम गिवन दैट इट डिपार्ट ऑन टाइम, हाँ. इसमें लिखा डिपार्ट एंड अराइव ऑन टाइम, तो दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई? आपको इंफॉर्मेशन है. अच्छा, अगर आपसे ये कहें कि ये तो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो ऑन टाइम अराइव होती है, ये आपके पास केवल इंफॉर्मेशन है, तो आपको क्या पता ये डिपार्ट्स ऑन टाइम ही होगी? आपको पता है इसकी इंफॉर्मेशन? बताओ. अगर मैं ये कह दूं कि 82% चांसेस आर देयर दैट द फ्लाइट अराइव ऑन टाइम, अब डिपार्चर का मुझे क्या पता? लेकिन अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव. अब आप न्यूज देखते हो, जितनी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, न्यूज क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है आने की वो मैक्सिमम न्यूज है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने की वो मिनिमम न्यूज है. जैसे अगर मैं आपको न्यूज दे रहा हूं कि सन राइज इन द ईस्ट, तो ये आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, ये आपको पहले से पता है. लेकिन अगर मैं कहूं कि सन राइज इन द वेस्ट फ्रॉम टुमारो, तो दिस विल बी द इंफॉर्मेशन फॉर यू. तो ऑल इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी. अगर आपको अराइव होने की प्रोबेबिलिटी पता है, डिपार्चर की तो नहीं पता है, लेकिन मुझे अभी ये पता है कि डिपार्च ऑन टाइम है, इट इज डिपार्टेड ऑन टाइम. So if it is departed on time, I have to find out it arrives on time. So मेरे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये गिवन है पहले से. जैसे आप सिंपली बोलते ना, आप कम्युनिकेशन करते हो, जैसे अगर मैं इस कम्युनिकेशन की बात करूं, 0 1 1 0. सो अगर मैंने बिट 0 सेंड की और मुझे 0 ही मिल गई, और मैं अभी इस एंड पे खड़ा हूं, मैंने 1 सेंड की, 1 मिल गई, मे भी पॉसिबिलिटी कि मैं 1 0 मिल जाए या 1 मिल जाए. सो मैं इस एंड पे केवल ये देख सकता हूँ, मुझे ये पता है कि मैंने 0 सेंड की, तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि मैंने 0 सेंड की, मुझे पता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट 1, और मैंने 1 सेंड किया है, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट 1 आल्सो एट द ट्रांसमीटर. लेकिन जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे रिसीव हुआ है 0 रिसीव हुआ है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 वाज ट्रांसमिटेड. अब ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता है. हाँ, अगर मुझे पता होता कि 0 मुझे मिला है, मेरे पास दो भी तो चांसेस होते हैं कि मुझे 0 मिला है और मुझे पता है 0 ही ट्रांसमिट किया गया है, ये एक इंफॉर्मेशन है. और दूसरी इंफॉर्मेशन एक और हो सकती है कि मुझे 0 रिसीव हुआ है लेकिन मैंने 1 ट्रांसमिट किया था, ये भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है. लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं पता है, बस मुझे ये पता है कि 0 मुझे रिसीव हुआ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 ट्रांसमिट हुआ. तो हर एक इंफॉर्मेशन में क्लियरली डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हर एक इंफॉर्मेशन में. ये इस एंड पे मुझे बस ये मिल रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है, मतलब 0 रिसीव हुआ है. सो अगर मुझे 0 रिसीव हुआ है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मैंने 1 सेंड किया था, तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/0 P0 बाई P1 बेस थ्योरम से। मीन्स ये चीज ट्रांसमीटर साइड को पता है इन्फॉर्मेशन, आपने ये इन्फॉर्मेशन ली कि 1 ट्रांसमिट हुआ और 0 रिसीव हुआ, ये चैनल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको चैनल की इन्फॉर्मेशन है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मीन्स यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 0। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यहाँ से ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है और ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, जब आप इन्फॉर्मेशन पहले से पता है तो अब आपके हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी ये आपको पता ही है, सिंपली 0.82। लेकिन अभी जब आपको ये पता चल गया तो अभी आप इन्फॉर्मेशन बढ़ गई ना, प्रोबेबिलिटी आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। ऐसी है सिंपली, आप रोबोटिक्स डिजाइन में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, अब आप जितनी उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, उसकी मशीन लर्निंग करोगे, वो उतना ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएगा। मशीन लर्निंग यही तो है। अब आपने उसको पहले से ही लर्निंग दे दी कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें पता है, ये इन्फॉर्मेशन उसको पहले से दे दी, तो आप सिंपली ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे और ये ज्यादा आप परसेंटेज में, ज्यादा परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, मींस आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है इस टाइम, अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है पहले से किसी सिस्टम के बारे में। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो आपको पता ही है 82% है। तो इन्फॉर्मेशन का अंतर पड़ता है हर एक चीज में। आप कोई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी यूज करोगे, आप उसको मशीन लर्निंग दे रहे हो, उसको सिखा रहे हो पहले से कि ये इन्फॉर्मेशन। आप छोटे से बच्चे को पहले हजारों इन्फॉर्मेशन देते हो कि सड़क पे जाना, ये करना, वो करना, ABCD पता नहीं क्या क्या, और फिर बाद में वो डिसीजन एक्यूरेट लेता है, उसकी डिसीजन पावर बढ़ जा रही है, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। प्रोबेबिलिटी मीन्स इन्फॉर्मेशन, उसको ये पहले से पता है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रही है, वो हाई प्रोबेबिलिटी उसको पहले से पता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now the probability departs on time, given that it arrived on time. So if it is departed on time, so the required probability is this, it is arrived on time, you know this thing. So ये depart on time होगी कि नहीं होगी, अब इनका बारे में, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर कोई फ्लाइट आ गई है और डिपार्ट उसको होना है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ऑन टाइम आई तो ऑन टाइम ही डिपार्ट होगी। अगर जो प्लेन चला रहा है, पायलट है, उसको नींद आ गई तो, उसका कुछ काम आ गया तो, वो बीमार हो गया, दूसरा चेंज करना पड़ गया तो आपको क्या पता। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें आपको यू हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग फ्रॉम द बेस थ्योरम। सो इट इज 0.78 by 0.82, so it is 95%। सिमिलरली आपका ही जो क्वेश्चन आया, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ा रहा हूँ, मेरे माइंड में एक चीज आई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट अराइव ऑन टाइम given that it is not departs on time. D dash means not depart on time. So ये कैसे कैलकुलेट, अभी आप बोल रहे थे कि ये एग्जैक्ट, तो हर एक टाइम के लिए फिर ये 82% ही होना चाहिए, इसके लिए भी 82% होना चाहिए, इसके लिए भी 82, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन थी आपके पास कि ये टाइम ऑन टाइम डिपार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये ऑन टाइम डिपार्ट नहीं हुई है, तो अराइव ऑन टाइम होगी या नहीं होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑन टाइम अराइव होगी, डिपार्ट तो हुई नहीं है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेस रूल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन PDA, इट इज P upon D PD. dash। अब PA इंटरसेक्शन D dash, it will be PA minus PA intersection D by 1 minus PD। आप एग्री हो इस चीज से या नहीं? मैं अगर एग्री नहीं हो तो ये पॉइंट एग्री है हो या नहीं हो, नहीं तो मैं इसको बताऊं।
एग्री हो तभी बोलना, ऐसे नहीं बोलना। यस सर। ओके, एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको तो PA 0.82 माइनस 0.78 upon 1 minus PD. PD is 0.83. So from here you can find out 0.24. और ये कैसे आया मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे वेन डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा। ये सैम्पल स्पेस है, ये इवेंट A डिपार्ट अराइव एंड D डिपार्ट, A and D. So here A PA इंटरसेक्शन D डैश, अगर मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट करूँ, it is A intersection D, you know this thing, and D dash P in A, अगर ये D है, ये वाला पार्ट मेरा, अगर मेरा ये पार्ट D है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट मेरा ये D डैश होगा, ये सारा D डैश है। अगर ये D डैश है और मुझे कैलकुलेट करना है A intersection D dash, so A is this or D dash is this, so A intersection D dash, it will be, you can see here, this part is A intersection D dash, this part A intersection D dash, and you can calculate this, this is PA, and if I subtract from PA, इसमें से मैं PA intersection D इसको निकाल दूं तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड ये आ जाएगा। ओके, so you can easily find out here. Any doubt? No sir. Okay, now next question is, suppose that the number of typographical error, typo error on a single page on the book has a Poisson distribution with the parameter lambda. Calculate the probability that there is at least one error. So here at least one error minimum. So I can find out it is at least minimum 1 or 2 or 3 or maximum. So I can write it as 1 minus P x less than equal to 1, and this is 1 minus e is to the power minus 1 by 2 is to the power minus lambda. So it is approximately 0.393. So this is simple case. Now next question. A shipment of 20 similar laptop computer to a retail contains 3 that are defective. If a school marks a random purchase of 2 of these computers, find the probability distribution for the number of defectives. So if I consider here, you can see 20 similar 20 are there and 3 are defective. This means 7 are okay, 3 are defective, and total are 20 laptops here. This is simple case. So if I consider random variable x is the possible number of defective computers purchased by school, because you want to find out the probability that number of defective. So here the random variable, it may take the value 0, 1 or 0, 1 or 2, because only 2 computers are going to select. So it may possibility no one having no one is defective, one is defective from 2 or all 2 are defective in the selected. So if I consider the PDF or CDF, you can say PDF or CDF probability at x is equal to 0, means in the selected computer there is no defective. So no defective means 3
डिफेक्टिव पार्ट्स में से आप कोई सिलेक्ट नहीं करोगे, 3C0, और आपको जो 2 सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट होंगे आपके 17C2, एंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 2 सेलेक्ट करना है 20 में से 20C2, so it is 68/95, and fx1, it is probability at x is equal to 1, it is 3C1 and 17C1/20C2, so it is 51/190, and f2, it is probability at x is equal to 2, means C2 as 17C0 and 20C2, so it will be 3. So x is here 0, 1, 2, and fx, it is 68/95, 51/190, and 3/190. So this is the probability distribution you want to find out. So next question, suppose that a discrete random variable x has the following PMFs: 1/2, 1/4, 1/8, and 1/8. Find and sketch fx. So you can sketch this fxx. Fxx means the sum of the probability. So if x is just like x is 0, 1, 2, 3, and 4. At x is equal to 0, probability is 1/2, and this is 1/4, 1/8, 1/8. So if I consider, it is 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, and 1. So at 0, it is 1/2, or I can say it is 4/8. So at 0, it is 4/8. At 1, sorry, at 1, it is 4/8. So at 1, it is 4/8. And at 2, it is 1/4, or you can say 6/8. So it will be 2/8. So 2/8 plus 4/8, 6/8. So at this, it is 6/8. And at 3, 6/8 plus 1/8, 7/8. At 3, it is 7/8. And at 4, 7 plus 1, 8/8. At 4, it is 1. So this is the CDF. And now next part is find x less than equal to 1, x between 1 to 3, and x between 1 to 3. And you know, so first question, if I consider x less than equal to 1, so you can write it as fx1, and fx1 at 1, it is at 1, so it is 4/8. Okay. And if I consider x less than 1, so x less than 1, here you can see there is no. So if I consider this thing, so it will be 1 minus, or you can say 0 if I consider this. And the second point is probability when x between 3. So you know from the definition, it is fx3 minus fx1. So fx3, 7/8, and fx1, 1/2. So 7/8 minus 1/2, it is 3/8. And third point, this one, and from the definition, you know, this is fx3 minus fx1, and this extra equal to, so it is added here at x is equal to 3. So it is 7/8 minus 1/2 plus 1/2. So answer is 7/8. So this is the answer. So this is tutorial third. So if you are having any doubt, you can ask. Otherwise, I'm going to disconnect you, and we will meet in the tomorrow lecture. No, tomorrow, no, on Monday lecture at 6. तो 6 वाला एक बार रिपीट कर रहे हैं, टाइपोग्राफिकल एरर वाला. हाँ, उसमें क्या है?
ये वाला बहुत जल्दी वो निपटा दिया सर, वो सुन ही नहीं पाए। नहीं, जल्दी नहीं निपटाया। ये दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन का फॉर्मूला आपने लगाया, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ओके 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 ओके। यहाँ पे आपने पॉइजन का फॉर्मूला लगाया सिंपली। ये निपटाया नहीं है बिकॉज दिस इज इजी। ओके, वो पुराना लिखने में टाइम लग गया था ना, तो अच्छा लेदर समझने में टाइम लग गया। ठीक है, आप समझो, लिखो क्यों, लिखना तो मैं आपको ये दे ही रहा हूँ, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, एलएमएस पे सब कुछ है। हाँ फिर भी नहीं आप लिखते सर, वो उस समय ध्यान नहीं रहता ना, नहीं लिखते हैं तो। ओके ओके ठीक है। नहीं, ये भी बेटर है कि आप साथ साथ करो तो बेटर रहेगा, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठो, थोड़ा वो जितना भी कर पा रहे हो दैट इज बेटर। ओके, सो एनी क्वेश्चन? नो सर। No, sir. ओके, थैंक यू। चीज लगा